gaming itself can be very addictive. Okay, so you're not losing money, but you're losing time. Gaming addiction, gaming, gambling, ये कुछ ऐसी टर्म्स है जो कई बार लोग यूज करते हैं। एंड कई बार तो लोगों को पता भी नहीं है कि ये एग्जैक्टली गेमिंग गैम्बलिंग में फ़र्क क्या है, और कई बार वो फ़र्क ज़्यादा रहता भी नहीं है। क्योंकि लोग एक इंटरचेंजेबली इन टर्म्स को यूज़ कर लेते हैं, एंड गेमिंग से भी एडिक्शन हो जाती है, और वो भी ऐसे लाइक एडिक्शन तो लोग कहते हैं ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट्स होती है। हाउ कैन यू हैव गेमिंग एडिक्शन? इट्स अ रियल थिंग गाइस। गेमिंग एडिक्शन इज़ अ रियल थिंग, गैम्बलिंग एडिक्शन इज़ अ रियल थिंग, एंड इट्स अ बिग प्रॉब्लम। अगर आपको ये गेमिंग की एडिक्शन है या गैम्बलिंग की एडिक्शन है, वो तो आप ही बता सकते हो है कि नहीं है, या टेंडेंसी है। मतलब आपने कभी थोड़ा खेला है और आपको लगा जब खेला तो इतना ज्यादा मजा आ गया कि मन करा बस वही करते रहे, दैट मीन्स आप में टेंडेंसी है एडिक्शन की। तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इससे कैसे बच के रहना है। बट इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको एक ऐसी चीज, वी शुड मेक इट क्लियर कि गेमिंग गैम्बलिंग में फर्क क्या है। मैं भी थोड़ा बहुत एक्चुअली कंफ्यूज हूँ, because at least when I see the internet, the technical definition is that gambling is something which involves chance, only chance। आपने कॉइन टास्क किया, मैं जीता, तू जीता, you know, depending on that वो पैसे लेके जाएगा। That's, there is no skill in that, right? We are just tossing a coin, 50-50 chance, so that's gambling. Gaming is when you are playing a game and the winning comes from mainly skill and talent, right? So that's gaming, that's what they say. Now, technically, basketball is a game. Yeah, it's not based on luck. Correct. But then, even video games, the video game makers say it's not gambling because it's mainly based on your skill. Jitna अच्छा आप video game को खेलोगे, that's how high your score will be. That's how you will do. They call it esports nowadays. Esports के tournaments होते हैं दुनिया भर में. They are televised. People watch. It's an industry, right? So there is gaming, yes, which is purely skill based, and there is gambling like a coin toss, like I told you. The problem is कुछ चीजें ऐसी हैं जो कहने को गेमिंग है, लेकिन उसमें कुछ गैम्बलिंग टाइप चीजें भी हैं, राइट? जैसे अगर कोई गेमिंग की चीज है जिसमें आपको, आई डोंट नो, प्रिडिक्ट करना है कि कौन मैच जीतेगा। नाउ यू कैन से कि आपको स्टेटिस्टिकल नॉलेज आप ले सकते थे, एंड उससे आप आइडिया लगाते हैं कौन अच्छा मैच खेलेगा, कौन सा फुटबॉल में अच्छा मैच जीतेगी टीम, ये वो, और क्रिकेट और वटेवर, एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपने पैसे लगाए। So the moment you put money, I think a little bit of gambling component automatically kicks in, because even though you picked based on some skill of picking the team कि हाँ इसके statistics best हैं, इसका strike rate, इसका win rate, that day anything can happen, and if that day anything happens, that some of it even that team can't control, and then that becomes random, that becomes thoda gambling like। So thoda wo agar aap Venn diagram banao, there is a gaming and there is gambling, but there is that big overlap area in between where a lot of people are, who say, obviously gambling companies, gambling game makers, product makers don't say ki we are gamblers. They will call it gaming, but it has gambling like characteristics, matlab money is involved, and the money can be won or lost in big numbers। matlab you can lose 100% of money, you can even win 100% maybe, एंड सम ऑफ इट इज चांस बेस्ड, सम ऑफ इट इज स्किल बेस्ड, मिक्स भी तो हो सकती है ना लाइफ में चीजें। तो द मोमेंट चांस आ गया और थोड़ा सा चलो स्किल भी था, इट इज गैम्बलिंग। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? दिस इज इंपॉर्टेंट इज यू कैन बी एडिक्टेड टू गेमिंग एज वेल एज गैम्बलिंग, ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं। बट गैम्बलिंग एडिक्शन इज पर्टिकुलरली बैड, बिकॉज इफ यू हैव गैम्बलिंग एडिक्शन, दिस वेरी हाई चांस यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज द जो कसिनो होता है या जो हाउस होता है जिसे कहते हैं, जो गेम खिला रहा होता है, वो हमेशा जीतता है। यू नो, दे विल ऑलवेज हैव अ सिस्टम वेयर दे विल कलेक्ट 195 विल बी द विनिंग्स, एंड वो मतलब डिपेंडिंग ऑन कौन जीतता है उसको मिल जाता है, या 5% वो जीत विल गो टू द ऑर्गेनाइजर, द डीलर और द हाउस और द कसिनो, वट एवर यू कॉल इट। एंड इट कुड बी 5%, इट कुड बी 2%, बट ओवरऑल वो हमेशा जीतेगा, एंड ऑलवेज there will be less money to be won than what is put in। धीरे धीरे you will actually end up losing all your money। हो सकता है someone lends you money and आप you can be in debt also। I know I know people who have done IPL cricket betting with bookies, and they've lost money, and they are in loans, and loan sharks आ रहे हैं उनके घर पे।
अपनी जिंदगी पर बात कर ली उन्होंने. सो गैम्बलिंग एडिक्शन इज पर्टिकुलरली बैड. व्हाट अबाउट गेमिंग एडिक्शन? लेट्स से अगर वो प्योर गेमिंग है, यू विल से कि हम वी आर नॉट प्लेइंग फॉर मनी, यू नो, फर्स्टली तो गैम्बलिंग की तो बात ही खत्म हो गई. Yeah, there is some chance of winning, losing. So, but that's not gambling because पैसे नहीं involved, and mostly it's a skill game. So then we are just gaming. You know, it's gaming. It's cool. There is gaming, e-gaming tournaments are happening in the world. तो आप हमें ऐसे कैसे कह रहे हो कि this is something bad? The problem is they have now done studies which show that जो लोग गेमिंग करते हैं उनको गैम्बलिंग की तरफ बढ़ने का चांस is much higher than someone who doesn't do gaming. अगर मैंने कभी गेमिंग करी ही नहीं है तो गैमलिंग का जो चांस है मेरा गैमलर बनने का वर्सेस जो बंदा गेमिंग करता है, द गाय हु इज डूइंग गेमिंग 4 times मोर लाइकली टू बिकम अ गैमलर. सो यू आर ऑलरेडी टेकिंग दैट रिस्क. होता ही है कि आप गेमिंग करते हो, करते रहते हो, फिर वो नशा नहीं आता उस, मतलब नशा तो खैर नहीं, बट लाइक दैट थ्रिल ऑफ प्लेइंग दैट गेम becomes less. Then you feel like, let me put some money in this. Then you put some money, then more money, then you tried more gambling like things. There is a chance. I'm not saying always happens, but there is a chance is 400 times higher. Second thing is gaming itself can be very addictive. Okay, so you're not losing money, but you're losing time. आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी नींद खराब हो रही है, आपकी फ्रेंडशिप्स खराब हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, आपकी पढ़ाई खराब हो रही है, आपका फ्यूचर खराब हो रहा है. सो इट्स एज बैड और मे बी वर्स ना, अगर आपका फ्यूचर खराब हो जाए. ऑफ कोर्स यू लूज मनी डायरेक्टली इन अ कसिनो, दैट्स गैम्बलिंग. बट इवन इफ इट्स जस्ट यू आर लूजिंग योर प्रेशियस टाइम इन योर यूथ, यू आर मिसिंग आउट ऑन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क यू शुड हैव डन, तो फिर यार वो भी एक तरह से एक नुकसान ही हो गया ना उस चीज का. सो गेमिंग कैन ऑल्सो बी रियली एडिक्टिव and you have to be careful of that. Both these things, they operate on something called the reward circuits of the brain. जो आपके ब्रेन में जब आप कुछ अच्छा करते हो तो आपका ब्रेन आपको एक रिवॉर्ड देता है कि हाँ यार मजा आ गया, गुड गुड गुड. तो वो गैम्बलिंग उस पर प्ले करता है, क्योंकि अगर आप जीतते हो जब पैसे, या अगर आप विक्ट्री आती है, या आपको वो वर्चुअल गेम में भी एक ट्रॉफी मिलती है, या विनर बड़ा बड़ा स्क्रीन पे लिखा आता है, यू फील गुड. So that is why you want to do it again. Your brain says, "Ye kar." You feel, I felt good, even though it's not real. You know, na, it's not real. When you win in a video game, it's just pixels. It's just a program. You know, it's not real life. You've not won in real life unless you are the esports champion of the world. वो example मत दो. That is like 0.01%. But most people are just doing time pass when they play video games, and you're not winning anything in real life, लेकिन आपके ब्रेन को लग रहा है कि आप कुछ जीते हो. So you keep doing it again. The other thing about the reward is कि random intermittent rewards can become very addictive. इसका क्या मतलब है random intermittent? Random मतलब अगर कोई चीज आपको कभी कभी कुछ मिलती है, कभी नहीं मिलती, वर्सेस एक चीज जो हमेशा आपको मिलती है, जो कभी कभी मिलती है चीज, आपको उसकी लत ज्यादा पड़ जाएगी, आपको उसकी एडिक्शन ज्यादा हो जाएगी. ये पता है रिलेशनशिप्स में भी होता है. इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एंड दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, जब फोन करो फोन उठाएंगे, हेलो स्वीटी, हेलो, हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छे से, ऑलवेज देयर फॉर यू. यू लाइक देम, यू लव देम, बट इतनी एडिक्शन नहीं होगी. बट इफ यू नोटिस किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ आपकी बहुत ज्यादा एडिक्शन हुई हो, वो तब होती है जब एक दिन वो आप पे इतना प्यार निछावर कर रहे हैं, 2 दिन आपको घोस्ट कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे मैसेज का, फिर एक दिन आके आपके गले लग जाते हैं, फिर एक दिन गायब हो जाते हैं. यू हेट इट, यू लाइक ये कैसा इंसान है. बट आई टेल यू वन थिंग, you get more addicted to such people. Yes or no? Put it in the comments below if this has happened to you, where someone who gives you the reward of love infrequently, मतलब intermittently and randomly, you will get more addicted. जब आपकी मम्मी आपको हमेशा प्यार करती हैं, that's not going to lead to a deep addiction. You love her, but you'll not be super addicted. But that kind of intermittent love, you can't get low. Same way with video games, gaming, and definitely with gambling, where the reward is intermittent. कभी जीतते हो, कभी हारते हो, कभी बुरी तरह हारते हो. And in gambling, and when there is money involved, तो actual loss कितना हो सकता है, लाखों रुपए हार सकते हो, लाखों रुपए जीत सकते हो, thousands at least. So it is becomes more than anything very very addictive. Now some people get more addicted to gambling than others. ये भी मैं आपको बताता हूँ. It's just not fully known in science कि ऐसा क्यों होता है. Some say it's genetics,
some say what happened in childhood. It really depends. But some people love gambling, just love. मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्हें दिवाली पे मतलब तीन पत्ती खेलनी है. दे आर वेटिंग फॉर दिवाली बिकॉज तीन पत्ती खेलनी है. एंड आई हैव प्लेड इट, बट आई एम लकी. इट हैज नेवर एक्साइटेड मी. मुझे लगता है तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, लिटिल बिट ऑफ स्किल, बट व्हाट इज दिस स्टूपिड थिंग वी आर सिटिंग ऑल नाइट डूइंग. I don't, luckily I don't get addicted to that. Once, एक बार मैं गोवा में एक इवेंट पे जा रहा था, कॉर्पोरेट इवेंट पे टॉक देने, एंड देयर वाज अ टैक्सी ड्राइवर, एंड ही वाज दैट माय होटल वेयर द इवेंट वाज इन अ होटल इन गोवा. एंड उसने मुझे ड्रॉप करते हुए कहा, कहते सर इस होटल में जाने के अंदर ना मेरे को दिल धक धक करता है. मैंने कहा क्यों? कहते हैं सर ये ना इस होटल में कसिनो है, एंड आई हैड अ जॉब वंस प्रॉपर, एंड आई हैड अ हाउस इन गोवा. आई हैड 50 lakhs ऑफ सेविंग्स, एंड ये वो कसिनो है जहाँ के मैं रात भर खेलता था, एंड आई हैव लॉस्ट ऑल माय मनी, एंड दैट इज व्हाई आई एम ड्राइवर नाउ, बिकॉज नहीं तो खाना कैसे खाऊं. I was like, wow, perfect English. He had everything. And I said, what do you feel now when you come here? Do you feel regret कि मैंने क्या कर दिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? कहते कभी कभी वो लगता है, लेकिन इस वक्त मैं आपके साथ, जब मैं इस बिल्डिंग में आया हूँ और आपको छोड़ने आया हूँ, नहीं तो मैं यहाँ कभी आता नहीं हूँ. अम, तो मेरे मन में एक्साइटमेंट आ रही है. मेरा मन कर रहा है कि मैं जाके उस कसीनो टेबल पे बैठ जाऊं बस और खेल लूं. मैंने कहा ताकि आपको लगता है कि आप जीत जाओगे इसलिए आपको. कहते हैं नहीं, मेरे को हारने में भी उतना ही मजा आता है. हारूं या जीतूं, मेरे को बस वहां बैठना है और खेलना है. नाउ थिंक हाउ डेंजरस इट इज. ही हैज लॉस्ट ऑल हिज मनी. ही इज वेरी पुअर नाउ. ही वाज लाइक प्रॉपर गुड मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास पर्सन. ही इज नाउ हैंड टू माउथ लिविंग, बिकमिंग अ ड्राइवर. एंड येट उसकी एडिक्शन इतनी स्ट्रांग है कि आज भी उसका मन है कि वो सब कुछ भूल गया है जो उसके साथ बुरा हुआ है, बस वो कैसीनो टेबल पे बैठ जाए. उसके बाद जेब में पैसे नहीं है. उसने कहा सर आप मुझे टिप भी दोगे ना अभी, मैं अगर टिप, मैं सीधा जाके कैसीनो में खेल के आ जाऊंगा. दैट्स हाउ ही वाज. एंड ही सेड आई डोंट केयर जीतू ना जीतू, मेरे को बस वो रश चाहिए दिमाग में कि जब अभी क्या होगा, मैं जीतूंगा कि हारूंगा. नाउ इट्स हार्ड फॉर अस, होपफुली यू डोंट हैव गैम्बलिंग एडिक्शन, टू फिगर आउट कि ऐसे कैसे हो सकता है यार. बट आई हैव सीन इट फर्स्ट हैंड. सो बेटर not to get into it. They say in science, you cannot get addicted to something you've never tried. You can't get addicted to gambling. If you've never gambled, you won't get addicted. If you've never smoked a cigarette, you cannot get addicted to smoking. So don't do it. Don't do this gambling thing. And even gaming, they call it gaming, but be careful. If the gaming is offered by a company making money, अगर कोई जो आपको वो गेमिंग करा रही है, वो कंपनी अगर पैसे बनाना चाहती है, so they will have to introduce some gambling like thing in that, right? It's not possible. So be careful. And nowadays it's all like you don't need कि घर के पास कसिनो हो, वो तो खराब है ही. एंड तभी हर गली में कसिनो अलाउड नहीं होता. इनफैक्ट दैट इज वाई कसिनो अलाउड नहीं है, गैम्बलिंग अलाउड नहीं है. एक आध कोई स्टेट होगी इंडिया में, जैसे गोवा में एक सर्टन फ्यू हैं, मे बी इन, आई डोंट नो, मिजोरम, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द लॉज, बट मोस्ट प्लेसेस इन इंडिया इट्स बैंड. बट व्हाट अबाउट ऑनलाइन? अब तो आप कसिनो के क्या करना है जब आपके फोन पे ही हो जाएगा तो. So you have to check yourself. Yeah, they can make it illegal. Gambling they'll make illegal, but then the companies will say gaming को आप कैसे illegal कर सकते हो? How can, if something is skill based, then why is it illegal? You're just doing some entry fees, and well, they play all those games around the regulations, and nowadays something was, they have put a lot of taxes and all that is going on. But आप क्यों फंस रहे हो उसमें? Don't do it, man. जिंदगी बर्बाद हो सकती है, रियली. लाइक आई नो पीपल जिनकी हुई है. सेवरल एग्जांपल, लैक्स ऑफ आईपीएल बेटिंग डेट्स, दिस ड्राइवर इन गोवा. बेटर नॉट टू गेट इनटू इट. सो इवन वीडियो गेम्स, टू एडिक्टिव, कैन वेस्ट लॉट ऑफ टाइम. पैसे नहीं गए, बट पैसे पर टाइम चला गया, मेहनत चली गई, लाइफ से फोकस चला गया, ड्राइव चली गई. तो मतलब आगे के पैसे तो चले गए ना जो आपने कमाने थे. जो आपका एम्बिशन था वो चला गया. आपने वीडियो गेम जीत लिया, आपने ड्रैगन को मार दिया, आपको लग रहा है आप हीरो बन गए. आपने कुछ भी नहीं करा है. रियल लाइफ में जाकर ड्रैगन मारो ना. कोई एग्जाम खत्म करो, क्लियर करो, कोई बिजनेस करो, कुछ बनो लाइफ में. रियल लाइफ को वीडियो गेम मान लो. रियल लाइफ में मेहनत करने की एडिक्शन इज ओके. आई मीन दैट कैन ऑल्सो गो टू फार, बट आई डोंट थिंक, दैट्स वेरी रेयर कि पीपल गेट सो एडिक्टेड टू वर्क कि दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. इट्स पॉसिबल, बट आई एम जस्ट सेइंग एटलीस्ट अ गुड प्रॉब्लम
to solve. Gambling में अपनी लाइफ बर्बाद कर देना, not good. So I hope you will not do this. I hope you will understand this gaming, gambling business. They are just labels, and companies who want to make money don't care. वो आपको गेमिंग से एडिक्टेड कराएंगे, गेमिंग से थोड़ी सी गैम्बलिंग डाल देंगे उसमें, फिर गेमिंग से गैम्बलिंग की तरफ ले जाएंगे और पूरा गैम्बलिंग पे ले जाएंगे और आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. सो व्हाई वुड यू डू दैट मैन? है ना? तुम्हें तो लाइफ में कुछ बनना है. सो जस्ट डोंट गेट इनटू दिस चक्कर ओनली. एंड या, just get stay away from this gaming addiction, gambling addiction. If you have it, quit for 30 days. If you have any addiction, I say this, anything, quit, try to quit for 30 days. Your brain will protest. बहुत लड़ोगे, तुम्हारा ब्रेन बोलेगा नहीं नहीं अभी चाहिए, अभी करना करना है, बिकॉज तुम्हें लत पड़ी हुई है. बट आफ्टर 30 days इट विल बिकम क्वाइट. रीसेट हो जाता है मामला. द ब्रेन लर्न्स टू डी एडिक्ट ऑल्सो. सो देर इज होप इफ यू आर एडिक्टेड, बट द बेस्ट थिंग, don't get into it at all. Take care. Hi guys, thank you for watching this video. If you liked it, do like, subscribe, share and comment. And to invite me as a speaker at your event, please contact my team at the contacts here and also given in the description below. Take care.